B is 1. Now B1 कौन से option में? There is only one option that is having B1, right? Which is the B option. Okay, so if you know any one of them also, you would have been fine. For example, if somebody remembered what is lambda m, so lambda m is equal to what? It is equal to kappa upon concentration. Now, since concentration is in moles per liter, we have to convert this into milliliters. इसको 1000 से multiply करते हैं, right? But it is essentially what kappa upon concentration. So I can at least say lambda m what is proportional to kappa upon concentration. So एक option कौन सा है? एक option is C, एक option is 3. So किसी एक का भी आपको अगर आता होता तो you could have easily done this. ठीक है? So the B is the correct option. Please write this down. B is the correct option. अच्छा, बाय द वे एक जनरल चीज आप लोग ना हम सबको बताते रहे बिकॉज इरम फेस सम इश्यूज कि द लिंक फॉर ईच क्लास, आई थिंक लिंक आपके जितने भी क्लासेस होते हैं, चाहे बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, आई थिंक दैट इज द सेम लिंक, राइट? इरम, यस और नो? हैव यू नोटिस्ड दैट? नो, नहीं, लिंक अलग अलग होता है या नोटिस नहीं किया आपने? नोटिस नहीं। नहीं, आप एक बार देखिए, आई थिंक लाइक ईच बैच हैज अ सेपरेट लिंक. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर द C1 बैच, तो आपका जो इसमें जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, इन सब के लिए सेम लिंक होगा फॉर द फिजिक्स क्लास आल्सो. प्लीज चेक. ठीक है यस, ना? सब में सेम है ना? सो टाइमिंग्स के लिहाज से ना ज्वाइन करने की कोशिश कर ही लिया कीजिएगा, ठीक है? सो इफ समटाइम्स देयर इज सम इश्यूज है ना, कुछ कंफ्यूजन हो जाए, बहुत सारे बच्चे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना? तो आप लोग एक बार ये कर लीजिएगा. एंड एक दूसरा चीज ये कीजिएगा, इन केमिस्ट्री इफ देयर इज सम, अगर कभी भी कंफ्यूजन आपको ना, क्लास है नहीं है, क्या हो रहा है, प्लीज मैसेज मी आल्सो. ठीक है? दिस इज फॉर एवरीवन. ओके रम? यस सर। Factors affecting conductance. ठीक है? In this, first of all, we will understand what happens to conductance. Then we will understand what happens to conductivity. Then we will understand what happens to the molar conductivity. तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नंबर 1 क्या है आपके पास? कंडक्टेंस में क्या होता है? रिलेटेड टर्म क्या है आपके पास? कंडक्टिविटी. And the third term is molar conductance. Third term क्या है आपके पास? It is molar conductance. Now, see, first of all, what is conductance? Conductance tells you, conductance का अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा, what is conductance? Please see. नंबर 1 लिखिएगा. कंडक्टेंस क्या होता है आपके पास? कंडक्टेंस that is G, it is equal to kappa into volume. Kappa into volume. And molarity, it is equal to the number of moles of solute divided by volume. Number of moles of solute divided by volume. Acha, in this case I can say that if the molarity is high, then what will happen? The volume is low. है ना? मोलारिटी है तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम की क्या बोल सकते हो? वॉल्यूम इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी.
And that is why you can say conductance decreases with increase in concentration. Conductance क्या होता है? It decreases with increase in concentration. Please write this down. All of you done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Done. Conductance. Right, next point. What happens to conductivity? That is denoted by kappa. What happens to conductivity? So what is conductivity, by the way? Conductivity is the conductance that is offered by a unit volume of conductor. So if you have 1 centimeter cube volume, whatever the conductance is offered by that is going to be the conductivity. So please write here, conductivity depends on the amount of ions in 1 centimeter cube volume. Okay. Now, as the number of ions in 1 centimeter cube increases, conductivity will increase. Hence, what we can say, conductivity is directly proportional to concentration. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया. ठीक है, I hope all of you have written this down. Right, next, molar conductance है ना, ये this is the most important one. Please नहीं, factors affecting molar conductance. Factors affecting molar conductance. Right, number 1, nature of electrolyte. Nature of electrolyte, ये क्या बोलेंगे? Strong electrolyte and weak electrolyte. Okay, nature of electrolyte, please write the lambda m of strong electrolyte is higher than the lambda m of weak electrolyte. Why? Because strong electrolyte is going to give you 100% ions, and where you have more number of ions, in that case you are going to have higher conductance. Molar conductance will be higher in that case. Right, next, size of ion.
Obviously, if you have small size of ion, then its mobility is going to be very high. It's going to move very easily. And if it is going to move very easily, it is going to conduct electricity very easily. The smaller the size of ion, greater will be ionic mobility and higher lambda. So clear? The smaller the size of ion, greater will be ionic mobility, and higher lambda m. And higher lambda m. Okay. Right. Third point. Temperature. Now, please write. When we are going to increase the temperature, then the ionic mobility is going to increase. Ions are going to move faster, and that is why the lambda m is also going to increase. Please write the interionic interaction decreases with increase in temperature, leading to greater ionic mobility and higher lambda m. Fourth point लिखिएगा, concentration. This is the most important. Concentration में क्या है? Please write. When the solution is diluted, the solution is diluted, the lambda m of electrolyte increases. Because with dilution, dissociation of electrolytes increases. Okay, please see here. Also, we know the formula that lambda m is equal to kappa into 1000 divided by the molarity. As you can see, lambda m is inversely proportional to molarity. What is happening? If the molarity will increase, the molar conductance or molar conductivity is going to decrease. Similarly, if the volume decreases, the molar conductivity will increase. And technically, why it is happening? With the formula, आपको mathematical expression समझ में आ गया. Technically, why it is happening? It is happening because when you are going to dilute a particular solution, on dilution, the number of electrolytes that are dissociated increases. Even though the increase in strong electrolyte is very small, very minute, and the increase in weak electrolytes is very high. So weak electrolytes में अगर बहुत पानी डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा dilute कर दीजिएगा, then it is going to have a very high level of dissociation. And that is why with dissociation, you will get more number of ions, and more number of ions is going to lead to higher conductance. Okay, so please write this down. So lambda m is directly proportional to dilution. Now, एक चीज होती है infinite dilution. What is infinite dilution? Infinite dilution, it will be achieved. For example, let us suppose this is the graph, and here we have concentration, here we have lambda m. At a particular concentration, this is the lambda m right now. This is the lambda m right now. Now, we started to dilute it. So if we are going to dilute it, the concentration will increase or decrease? Tell me, guys. When we are diluting a solution, the concentration will increase or decrease? Tell me. Hiram, Tarif, Rabia, Shahid, and Shahid. Decrease. So in the graph, I should go rightwards or leftward? Tell me.
ग्राफ में किधर Right. जाएंगे? Left. लेफ्ट जाएंगे. वेरी गुड, है ना? So we are going to move leftward in the direction, and as you know, as the concentration decreases, as the dilution increases and concentration decreases, lambda m increases. So the graph will look something like this. Yes or no? Please tell me. And there will be a point that after which, this is the point after which the lambda m cannot increase furthermore. Why? Because we have diluted it so much. We have infinitely diluted it, and if we have infinitely diluted it, that means the concentration is almost equal to zero. बात समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Concentration is effectively, it is approaching to zero. It will not be zero because there is some number of moles, right, inside the solution. But we have infinitely diluted it, and when we have infinitely diluted it, that means that is the limiting molar conductance at infinite dilution. So that is the limit of molar conductance, and that is known as limiting molar conductance. ठीक है? उसी को पढ़ेंगे. First of all, right, infinite dilution. Please write infinite dilution. Please write, this means the solution is, this means the solution is so dilute, the solution is so dilute that lambda m attains a maximum value. Attains a maximum value. Maximum value, or we can also say limiting value. That is the limit of the molar conductance, है ना? Or limiting value. And it does not increase on further dilution. And it does not increase on further dilution. Okay. Now, right next, the molar conductance at infinite dilution is aka, also known as limiting molar conductance, and denoted by lambda m naught. That means zero का मतलब हो गया zero concentration, और इसको ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है lambda m infinite. Infinite का मतलब infinite dilution, है ना? और एक तो आपका lambda जो होता है ना, कैपिटल lambda होता है, that is lambda m, इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है, lambda m naught और lambda m infinity. ठीक है? So infinity दिखे आपको, zero दिखे और lambda दिखे, that means it is talking about infinite dilution. Please write this down. All right, next. All of you done now? Yes or no, please tell me. Yes. Everyone done? Yes, sir. Saturday. Okay, please write it fast. बाकी लोग टॉपिक लिख लीजिए बस. Next, effect of dilution on lambda m of weak and strong electrolytes. समझ में आया ना सबको? ऊपर वाला पोर्शन कंसंट्रेशन वाला, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, ये सब प्लीज टेल मी. All of you understood, Yes. ना? Yes, What about sir. others? Tarif and Iram. Shahid, what about you? Yes, sir. Understood.
Okay. Should I move on? Effect of dilution on lambda m of weak electrolyte and strong electrolytes. Yes or no, please tell me. Yes. ठीक है, अब बताइए. Two types of electrolytes, right? Weak electrolytes and strong electrolytes. Which of them is almost completely dissociated? कौन सा आसानी से dissociate हो जाता है? Weak वाला या strong वाला? Tell me. Which is already dissociated almost? Strong. Strong electrolytes get 100% dissociated. Now, if you are going to dilute the strong electrolytes, then in that case, the further dissociation. Please समझ लीजिए. Strong electrolytes are those which are almost 100% dissociated already. ठीक है? They are 100% dissociation उसमें almost हो जाता है. If you are going to add more water to it, then some more dissociation may happen, but that dissociation will not be very huge. The difference in that dissociation and without dilution, with dilution and without dilution, strong electrolytes में जो dissociation का difference होगा, that will not be huge. Okay, that is why in strong electrolytes, the lambda m increases very slowly. It increases very slowly. Why? Because the dissociation is happening also very slowly. It is already very much dissociated. Please understand. I'm not saying that strong electrolytes में dissociation कम होता है. हम बोल रहे हैं जो increase है ना, increase कम होता है. ठीक है? The increase in dissociation is less. Why? Because it is already dissociated. आप रिच को कितना रिच कर सकते हैं, है ना? किसी आदमी के पास लाख रुपए है, उसको 1000 रुपए दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ा. किसी के पास उधार था, उसका आपने उसको उधार चुका के 1000 रुपए दिया आपने, तो आपको there's a huge difference in that. ठीक है? Please understand that. So first of all, you will write strong electrolyte के केस में क्या होता है. All of you got an idea? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Please write strong electrolytes. Now, यहाँ पे लिखिएगा when solution is ऐसे लिखिए. When solution is diluted, lambda m of strong electrolyte को SE से डिनोट करेंगे. ठीक है? Lambda m of strong electrolyte increases slowly. Because strong electrolyte is almost completely dissociated. Due to which graph of lambda m versus root of concentration is linear. Linear for what? For strong electrolytes. तो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है. Please write this down. Here we have root C. Here we have lambda m. And this is the graph like this. ठीक है? Please अभी मत बनाइएगा, थोड़ा सा इसमें करना कुछ बाकी है. एक सेकंड. यहाँ से यहाँ तक तो experimentally we can find out, and after that उसमें extrapolation कर देते हैं, right? I hope all of you know what is extrapolation. So we extrapolate further on. ठीक है? So we extrapolate this. ठीक है? इस तरह से extrapolate कर देते हैं. Now this value on the y-axis, this is the limiting molar conductance. इसको क्या बोलेंगे? This is lambda m naught या फिर lambda n infinity g बोले. ठीक है? Now, if I want to find out the lambda naught m, the limiting molar conductance, we can use this graph and we can find it out. Yes or no? Please tell me. इसमें एक पॉइंट लिखिएगा. Lambda m naught of strong electrolytes can be determined
using this plot. Okay. And this graph follows, or rather this plot follows Debye-Huckel equation. What is Debye-Huckel equation? इसको याद कर लेना है, ठीक है? Please remember this equation. Lambda m of a particular concentration is equal to the lambda naught m, that means the limiting molar conductance, minus b into root c. ठीक है? ये y is equal to mx plus c वाला ग्राफ बन Sir? जाएगा ये. Yeah, please tell me. This root C is molar conductance. Sorry, conductance. ये कंसंट्रेशन है. कंडक्टेंस को g से डिनोट करते हैं ना शावेज. Yeah, yes. C से कंसंट्रेशन. ठीक है? ठीक है, प्लीज सी हियर. This part is y. This is your c. Minus b क्या है आपके पास? स्लोप है m. And c is the x. So y is equal to mx plus c वाला ग्राफ है. एक और पॉइंट लिख लीजिएगा. This is b ना, is right. It depends on it depends on charge of ion and temperature. Done everyone? You shall please tell me. Yes, sir. Anyone still writing? Is there anyone who is still writing? Yes. No बोला ना आपने शावेज. Yes, sir. I don't. Right, next weak electrolytes. राबिया समझ में आ रहा है आपको? यस राबिया, नहीं आ रहा समझ में राबिया को? राबिया इज नॉट हियर है ना. देखिए ऐसे ही पता चलता है कौन क्लास में कौन क्लास से भाग जाते हैं. देखिए ज्वाइन करके चले गए. राबिया, am I audible? Is right when solution containing weak electrolyte is diluted, then lambda m increases. And this increase will be very sharp. Why? Because weak electrolytes are not completely dissociated. आप dilute करते जाइए, dissociation बहुत बढ़ता जाएगा. Okay, so the lambda m is also going to increase very sharply. Because the weak electrolyte is only partially dissociated. And as the dilution increases, the dissociation of electrolytes also increases. Dissociation of electrolytes also increases. Okay. Hence, the graph between
lambda m versus root of concentration is not linear. Rather, it is going to be exponential. ठीक है? Let's see here. थोड़ा सा धैर्य रखिएगा बस. धैर्य का मतलब पता है ना आप लोगों को? Do you know what is the meaning of धैर्य? धैर्य का मतलब नहीं पता है. Yes, sir. सबर. ठीक है, देखिए कितना अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन गया ना. ठीक है. So this is my root of concentration. This is your lambda m. Concentration मान लीजिए यहाँ थी आपकी, dilution करते करते थी. See how is the increase? And as you can see, it is not touching the line of y-axis. It is not touching the line of y-axis. That means we can never know. It is very evident, right? We can never know what is the limiting molar conductance from this particular graph. Okay, please write. It is evident बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, हम आपको एक्सप्लेन करने बोल देंगे अभी कि इससे क्यों नहीं पता चलेगा. It is evident that lambda naught m of weak electrolyte cannot be determined from this graph. ये बताइए कितना लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल. Tell me. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Javez, Shahid, Rabia तो नहीं है क्लास में. तारीफ and Aram. Sir, can you just explain? Explain once more. क्या लिखा है एक बार? Can you please read that point, Javez? It is evident that the molar conductance, नहीं, molar conduct नहीं. हाँ, फिर से पढ़िए. infinite molar conductance. हाँ, limiting molar conductance बोलते हैं उसको. Yeah, limiting molar conductance of weak electrolyte cannot be determined from this graph. ठीक है, वेरी गुड. ये बताइए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? Diluting a solution that इनफिनाइट डाइल्यूशन कर देना यार, है ना? इनफिनाइट डाइल्यूशन, राइट? dilute इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन इफ यू हैव इनफिनाइटली डाइल्यूटेड इट? near to zero. नियर टू जीरो, है ना? तो वही बताइए, नियर टू जीरो में तो लाइन तो क्रॉस टच ही नहीं कर पाएगा, मतलब पता नहीं कहां जाके टच करेगा इसको. इफ आई एम गोइंग टू एक्सट्रापोलेट दिस, देन आल्सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट ना. Yes. समझ में आ रही है? तो ये लैम्डा एम जीरो कंसंट्रेशन पे कभी मिल ही नहीं सकता इस ग्राफ से. समझ में आ गई बात? ये सुनो प्लीज. Yes. Yes. ये समझ में आ गया कि कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे समझना है? हाँ शावेज, ये समझ Yes, में sir. आया कि कुछ, ये समझ में आया आपको कि कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे समझना है? Sir, I can understand. हमने जो कहा वो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हमने नहीं, हमने इससे पहले जो आपको इतना समझ समझ के कहा वो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्या समझ में आया? शावेज भाई, अब Sir, तो it कुछ does समझ में not नहीं आ रहा end सर. at, it does not end at zero. नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं हम. आई एम नॉट आस्किंग दैट. ठीक है, ये तो हो, ये छोटी सी चीज है शावेज, लैम्डा नॉट एम, तो ठीक है. आई एम आस्किंग, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कैसे समझना है, ये समझ में आया है कि नहीं? इन जनरल आई एम आस्किंग. अब वेरिएबल ले लेते हैं ना एक्स, है ना, इस तरह से. फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, देन यू विल हैव टू पिन पॉइंट कि क्या समझ में. You will first of all see is there any word that I'm using which has a definition. Then you will expand on that definition. Okay. Then you will relate whatever is present in that definition. For example, यहाँ पे ग्राफ limiting molar conductance क्या होता है? The molar conductance at zero concentration. तो molar conductance and zero concentration वाला पॉइंट आप ग्राफ में ढूंढिए. मिल रहा है? नहीं मिल रहा. क्या मिल सकता है? तो मिल भी नहीं सकता है. Are you getting my point, Shaviz? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये लैम्डा नॉट एम तो छोटी चीज है. बच्चों को धीरे धीरे ये समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको कैसे समझाए.
like how to dissect a sentence so that you can understand it. ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे हैं? इरम, शाहिद, तारीफ. Yes, tell me guys. शाहिद, इरम, तारीफ, आप लोग समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया? सर के ऊपर से चला गया सर, कहाँ चले जाते हैं आप कभी कभी? हाँ जी, नहीं आया कुछ समझ में. इरम, आपको समझ में आया? या जोर से बोलिए इरम. समझ आ गए. समझ आ गया? अच्छा, इरम तो थक गई लग रहा है बिल्कुल इस तरह से. सी, now since we don't know what will be the limiting molar conductance of a weak electrolyte, so for this please remember very thing. एक चीज है जो हम बहुत बार बताने की कोशिश करते हैं. There are things which can be calculated and which is feasible to calculate. It is feasible to calculate it economically, with respect to time and with respect to the resources that we have. There are some things which should be calculated and there are something which should be measured. ठीक है, उसका हम आपको एक एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल, दो सिनेरियोस देते हैं हम आपको. देयर इज अ सिनेरियो, देयर इज अ वर्ल्ड इन व्हिच पीपल, sorry, there is a world in which people, what do? They have a device which measures the volume. क्या करता है? They have a device which measures the volume. ठीक है, and once they get the volume, so volume measure करके आपको मिल जाएगा device. So they don't have any formula for volume, but they have a formula for side. So they said that we will calculate the volume first and we will calculate the side length using cube root of volume. ठीक है, एक तो ये वर्ल्ड, there is one world like this. और एक वर्ल्ड है हमारा वर्ल्ड जहां पे हम लोग वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं रखते हैं. रादर व्हाट डू? वी हैव अ वेरी सिंपल डिवाइस दैट इज नोन एज स्केल और वी कॉल दिस रूलर, है ना. इससे क्या करते हैं? वी मेजर द ए. हमसे क्या निकलता है? स्केल या रूलर से वी मेजर द ए एंड वी गेट द लेंथ ऑफ द साइड एंड वहां से फिर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं एज ए क्यूब. ठीक है, अब प्लीज सी व्हाट इज मोर फीजिबल, to measure the volume or to measure a side length? Tell me guys, what is more feasible? Feasible का मतलब आसान क्या है? What is more easy, to create a device that measures the volume or to create a simple scale? Simple scale, right? इसी वजह से please remember कि if you they are asking ना कि side length क्या होगा, रियलिटी में जाइएगा आप. ठीक है, बुक से निकल के हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? रियलिटी पे जा रहे हैं. There is a cube there. ठीक है, वहां पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है. ठीक है, वहां पे आपको वॉल्यूम, यू कैन यूज एनीथिंग इन रियल लाइफ. ठीक है ना, वहां पे वॉल्यूम भी दिया हुआ है आपको एंड देयर आर स्केल्स आल्सो अवेलेबल एंड वॉल्यूम दिया हुआ है. और आपसे पूछा जाए वहां पे कि व्हाट इज द साइड लेंथ, सो यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द क्यूब रूट, यू विल टेक द स्केल एंड मेजर द साइड लेंथ. ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू मेजर द साइड लेंथ. बट अगर आपको साइड लेंथ के लिए आपको वॉल्यूम अगर पूछा जाएगा तो साइड लेंथ मेजर करके आप उसको क्यूब कर दीजिएगा. ठीक है, सो व्हाट इज फीजिबल? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? Formula चाहिए, so we calculate the volume and side length is measured, so we need a device to measure it. Now relating to the concept that we are studying, when we study strong electrolytes, then in strong electrolytes I can measure the molar conductance of 2 points. I can plot those 2 points, then I can extrapolate to get the limiting molar conductance, and I can extrapolate the 2 points to get the limiting molar conductance. Now in the case of the weak electrolytes, what we have to do, we cannot determine using any experimental methods, because the graph ban right is not going to touch the y-axis at any case. So in this case, for weak electrolytes, limiting molar conductance determine करने के लिए डिवाइस नहीं चाहिए, अब कैलकुलेटर चाहिए. अब कुछ हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब कुछ फॉर्मूला चाहिए. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्सपेरिमेंट सही है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वी नीड अ फॉर्मूला नाउ. सो दैट फॉर्मूला इज नोन एज कॉलरॉश लॉ. प्लीज राइट Colruy's law of independent migration. Sir, can just scroll up definition of second weak electrolyte. ये लिखा नहीं है क्या आपने शावेज? वेट अ सेकंड, शावेज, हैव यू नॉट रिटन होल दिस? ये पूरा चीज नहीं लिखा आपने? This something I missed here. Just something you have not. Okay.
Yes, sir. Finished. Okay. Right here, Paul-Roche law. और AU SH C कहीं पे आता है, I think Paul-Roche law of independent migration. Or law of independent migration. So, Yeah, tell me. sir, if they give us a graph where we have to identify which one is strong electrolyte or which one is weak electrolyte, how do we do that? ग्राफ में Hmm. तो अभी पढ़ाने दीजिए ना। देखिए ये तो है, ये ग्राफ है किसका बताइए? That's for weak. वीक और स्ट्रॉन्ग का कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कभी। हम समझ रहे हैं आप क्या आपको सवाल मिला होगा एक इस तरह का कहीं पे, जहाँ पे उन्होंने इस तरह से दिया होगा और ऐसे दिया होगा और उसमें से 1 और 2 दिया हुआ होगा एंड दे वुड हैव आस्क्ड मतलब आयंस दिए हुए होंगे, राइट? इलेक्ट्रोलाइट्स NH4CH, NH4OH, NH4Cl। दिस उसमें से आपको दिक्कत क्या होगी ना? आपको दिक्कत होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है पहचानने में। ग्राफ पहचानने में आपको दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. है ना? ठीक है, तो वो आपकी जो दिक्कत है वो है दिक्कत इक्विलिब्रियम की। ठीक है, हम सवाल कराएंगे उसका। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। No, actually, we had this question in Viva. सो यू हैव व्हाट? Viva. वाइवा है आपका? कब है वाइवा? हो गया. सॉरी? हो गया. अच्छा हो गया, उसने पूछा था उन्होंने। हाँ. अच्छा अच्छा। Law of independent migration is right. Molar conductance of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of molar conductance of its contributing ions at infinite dilution. So basically speaking, it is lambda m of a particular electrolyte will be equal to the lambda m of lambda naught of the cations plus the lambda naught of anions. ठीक है, simple. Example के तौर पे लिख लीजिए. For example, if I want to talk about the limiting molar conductance of NaCl, the electrolyte, then this will be equal to the limiting molar conductance of Na plus and the limiting molar conductance of, tell me, Cl negative, है ना? बात समझ में आ रही है? yes or no, please tell me. उसी तरह से मान लीजिए आपके पास if you have lambda naught of MgCl2, then MgCl2 में याद रखिएगा एक Mg है, 2 क्लोरीन, ठीक है? So you have 3 ions. So you'll have lambda naught of Mg2 plus the lambda naught of Cl negative. अब एक और Cl negative है तो rather just multiply 2 here. अच्छा हमारी सब क्वेश्चन ऑफ पीछे 2 into lambda naught of Cl negative. अब कुछ आप लोग करके बताइएगा. Lambda naught of KCl, lambda naught of AlCl3, lambda naught of NH4OH, lambda naught of CH3COOH,
lambda naught of AgCl. ठीक है, टेक कितना है 1 2 3 4 5 ना, ठीक है, take 3 minutes for this and send the answer on my WhatsApp. What happened, Rabia? थक गए क्या आप? No, Rabia? sir. Actually, my mobile was lagging a lot. अच्छा, कौन सा फोन है आपके पास? नया ले लीजिए भाई. Yes, sir. I don't know why it was lagging today. ओके, कुछ पढ़ा कि नहीं आपने यहाँ तक? कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, आई थिंक. No, sir. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, इतना आप लिखना चालू कीजिए कम से कम. कहाँ से नहीं, कॉलरॉस लॉ नहीं पढ़ा ना आपने, आई थिंक, राइट? No, sir. इससे पहले ये पढ़ा है आपने, वीक इलेक्ट्रोलाइट? यस राबिया? Yes, sir. I अच्छा got ठीक है, disconnected from there. ओके. कॉलरॉस लॉ लिख लीजिए. अदर्स आर डूइंग द प्रॉब्लम राइट नाउ, आप कीजिए जब तक. ओके, शायद सेंट एंड आंसर शायद है ना, शायद ये NaCl ठीक है, MgCl2 तो हम नहीं बताया. AgCl3 लिख दिया क्या हमने? AlCl3 है मेरे भाई, शायद शायद है ना, AlCl3. ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, हमें डरा दिया आपने. Ag प्लस, हाँ ठीक है, चलिए आंसर नहीं बताना है अभी ना. KCl ठीक है, वेरी गुड फॉर, ओके. NH4OH वेरी गुड. AgCl वेरी गुड, बहुत बढ़िया. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का आंसर नहीं आया? हो गया भाई, टाइम हो गया कंप्लीट. शावेज ने भेजा है. शावेज, KCl सही है, AlCl3 सही है, वेरी गुड. NH4OH सही है, CH3COH सही है, AgCl सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. What happened? Iram and Tarif.
Iram and Tariq waiting Sir, for I you am guys. sending now. ठीक है, Iram का मिल गया आंसर. KCl is fine, AlCl3 is fine, H4 is fine, CH3COH is fine, EgCl is fine. Very good, Iram. Tariq. KCl is fine, AlCl3 is fine, NH4OH very good, CH3COH very good, AgCl very good. चलो बहुत बढ़िया. Okay, so राबिया कुछ समझ में आया होगा आपको? Yes or no? Please tell me. Yes, Rabia, Yes, sir. you understood a bit, right? नहीं. हाँ, Yeah, sir. kind of. Okay. So tell me, just guess, make a guess. For KCl, I can write lambda naught of K plus K plus and lambda Cl minus. Cl minus. Lambda naught इसको बोलते हैं. Okay. AlCl3. So for AlCl3, it will be lambda naught of Al P Al positive. Yeah. Keep your mic on. ना? Keep your mic on. इतना off करने की क्या जरूरत? Yes, sir. Plus Lambda dot Cl minus. anything else? Three lambda dot Very Cl good. minus. Okay. Lambda naught of NH4 positive. Lambda naught of OH negative. ये आपको accent में English सिखाते हैं क्या आपके स्कूल में, राबिया? No, sir. So क्या कौन सा वीडियोस देखते हैं आप YouTube में? H plus Sir, I have developed that accent. from My cousins, they are from UK, so yeah. from your cousins. They are not from cousins. They are not from UK. They are in UK, right? Yeah, लोगों को अपना भूल जाते हैं. From UK हो गए, अंग्रेज हो गए आपके cousins. so Yes, they've Rabia. developed that हाँ, they have English, developed. everything. Yeah, for sure. They would have that accent. I'm not saying that, but they are not from UK. They are in UK, at UK. ऐसा बोलिए ना, ठीक है. This here, Yeah. right next. In general, what we can say? In general, we can say the lambda naught of, sorry, the big lambda, uppercase lambda naught of m. एक चीज आपको बता देते हैं. You have heard this word uppercase and lowercase? Yes, sir. All of you have heard this word, na? Uppercase, lowercase, yes or no? Yes, sir. Why is that? Uppercase and lowercase क्या मतलब? Case कहाँ से आ गया? Case किसको बोलते हैं? Tell me. What is case? Case is something where you keep something, right? Yes or no? Some container type. If you have some containers, उसको case बोल सकते हैं ना? Showcase होता है. तो कुछ ऐसी चीज रखने की होती है जहाँ पे शो करने के लिए रखा जाता है. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. So this word, the etymology of this word, uppercase and lowercase, it goes back to the era in which the printing was started, and the printing at that point, it was not printers like this, but it was what I can say. वो आपने देखा है मेहंदी कुछ होती है जो मेहंदी ना ऐसे स्टाम्प टाइप के लगाते हैं. Have you seen those मेहंदी? Like they have, क्या बताएं हम, एक सेकंड. I don't remember that word. Have you not seen people who put mehdi and that is the template is already present and they put it like a stamp in the hand, the designs and all? No. Yes, sir. All of you have seen that, no? So in the previous times, in the earlier times, the printing was done in that way only. Okay, so you have some kind of, एक second, got that. See, this is इसी तरह का ना, you will have letters here. For example, this wooden thing will be there and wooden stamp will be there. That will be for K. This will be like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And then there will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now, earlier, everything was written in capital letters only. Okay? In capital letters. Later on, the design for this was easy. So they made the
स्मॉल लेटर्स ऑल्सो, एक तो कैपिटल होता है और एक क्या होता है, स्मॉल होता है। जो कैपिटल लेटर्स रहता था ना, तो उसके जो ब्लॉक्स होते थे, दीज आर द ब्लॉक्स ना, तो इसको कहीं रखना पड़ेगा। तो दोस कैपिटल लेटर ब्लॉक वेर केप्ट इन दी केस विच वाज अबव, और लोअर वाले जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको कहाँ रखते थे, लोअर में रखते थे। सो व्हेन दे हैड टू प्रिंट कैपिटल लेटर्स, दे हैव टू टेक दोस स्टैम्प्स फ्रॉम द अपर केस, and when they had to print things that is of small letters, not capital, then they had to take the things from lower case. उसी से आ गया कि अगर आपने k निकालना है, if you look for k in the upper case it will be capital K, if you look for k in the lower case it will be the small k, that is non capital K. तो यहां से वर्ड आया upper case and lower case. बात समझ में आ गई? Yes or no, please tell me. Yes, sir. क्या आप ध्यान नहीं देते क्या? पढ़ाई लिखाई में यही सब चीज तो है। एटिमोलॉजी में बहुत ध्यान दीजिए, एटिमोलॉजी पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल टेल मी, you all know what is earbud, right? This was the first thing I think I, in my like 5 or 6 years of age, I was wondering why it is known as bud, because I came to know that we have flower, and flower से जो कली है, कली को bird बोलते हैं, right? And then I joined this with earbud because the earbuds, they have the cotton shaped as bird, तो वहां से नाम आया इसका earbud. Okay, similarly आपको काम आएगा कब? When you talk about saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, है ना? तो saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbon नाम कहाँ से आया? खैर, चलिए अभी आप आगे पढ़ते हैं. What I was saying, भूल ही गए हम. Yeah, in general I was saying, right? So in general I can say if I have lambda naught m, then this will be equal to number of cations multiplied by the limiting molar conductance of cation plus number of anions into the limiting molar conductance of anions, where n positive is equal to number of cations after dissociation, है ना? After dissociation, and n negative is the number of anions after dissociation. Next, please write application. The number one application of Colruy's law is to determine the lambda naught m of weak electrolytes. Please write number one. To determine the lambda naught m of weak electrolytes. Okay. Now don't write anything. Please listen. For example, I want to calculate. For example, there will be something that is given to you. ठीक है, हम आपको बताते हैं. Questions इस तरह से आएंगे. Please don't write anything. They will give you lambda naught of, let us suppose, CH3COONA, and they will say that it is x Siemens centimeter square mole inverse. They will give you the lambda naught m of NaCl. This will be equal to y Siemens centimeter square mole inverse. They will give you the lambda naught of HCl. Let's suppose they have given this as Z of Siemens centimeter square mole inverse. Okay, and they will ask you find lambda naught m of CH3COOH. Okay, find lambda naught m of CH3COOH. Now, please remember, we have to use these. We have to use these in order to find the lambda naught of CH3COOH. सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, just to get the hang of it, you will dissociate these things. ठीक है, you will dissociate all of these things. CH3, whatever is given, dissociate them. CH3COONA is equal to, or rather it is going to give you CH3COO negative plus Na positive. NaCl is going to give you, don't write anything, please see, is going to give you Na plus and Cl negative. Try to say things before me. जैसे हमने कहा ना,
HCl is going to give you, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए what it is going to give you. It's going to give you H plus and Cl negative. ठीक है. Now the lambda naught for these is what? It is X, Y and Z. ठीक है. The units are Siemens centimeter square mole inverse. Now these are the given, and then we have a target. Target क्या है हमारे पास? Target is CH3COOH. Now when you are going to dissociate it, you are going to get CH3COO negative plus H positive. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको ये बताइए. We have LHS and RHS. ठीक है, right hand side and left hand side for both of these things. Now target is made up of CH3COO negative. It is made up of what? CH3COO negative. ठीक है. Now choose one of the electrolytes. I have 3 electrolytes, 1, 2 and 3. किसमें CH3COO negative आ रहा है बताइए? In the right hand side. Where do you find CH3COO negative in the right hand side? 1, 2 या 3? किसमें? First one. First में. ठीक है. Now we want CH3COO negative and we have it in the first one. तो उसके लिए आप क्या ले लीजिएगा? प्लस X. ठीक है, X ले लीजिए. Now where do you find H plus? H plus कहाँ मिल रहा है बताइए? In the third one. थर्ड वन. तो थर्ड वन के लिए क्या करेंगे? प्लस प्लस क्या करेंगे? थर्ड के लिए क्या है? लैम्डा नॉट. Z. ठीक है, वेरी गुड. नाउ X से आपको ना दो चीजें मिल रही है. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. CH3COH CO नेगेटिव भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है? Na पॉजिटिव भी मिल रहा है. बट वी डोंट नीड द Na पॉजिटिव. ये क्या चाहिए? ये नहीं चाहिए हमको. Z में क्या मिल रहा है? यू हैव H plus also and Cl negative also. But we don't need only H plus, we don't need Cl negative. So we can do what? Minus lambda naught of Na plus and ऐसे कर सकते हैं प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव. हाँ या ना बताइए, कर सकते हैं ऐसा? Yes. है ना? बिकॉज क्या चाहिए था? सिर्फ CH3COH और Na और H plus का चाहिए. Now what is this? बताइए. Here we have Keep to your find mic. limiting molar conductance of CH3COH. Yeah, correct. Okay. है ना? ये दिया ना, फाइंड लैम्डा नॉट m of CH3COH. Okay. Now what is this? This is lambda naught of NaCl. सही है? Which is equal to what? Which is equal to y. So what I can say? I can say that lambda naught of CH3COOH is equal to x plus z minus y. ठीक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, you don't have to do all of these things. आपको खुद ब खुद दिख जाएगा. जो जो चीज चाहिए, whatever ions you need, check them कि वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट के राइट हैंड साइड. एंड once you are done, once you get all the electrolytes, CH3CO negative मिल गया, H plus मिल गया. अब आप एलिमिनेट करने की सोचिए कि X में कहाँ आ गया, Z में क्या आ गया, उसको एलिमिनेट कर. ठीक है, तो प्लीज राइट दिस डाउन. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस ना? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. प्लीज इसको लिख लीजिए. एंड एरम आपका जो लास्ट टेस्ट हुआ था इसमें सिलेबस क्या था आपका? आई थिंक मतलब मोस्टली इट इज हैलोरिक एंड हैलोरीन होंगे ना. एक सवाल और डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें दी हुई. या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलर कंडक्टिविटी का था. अच्छा, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी था. ओके. अच्छा, ये सवाल आपसे बाद में फिर हुआ है? मतलब इसके लिए आई कैन एक्सप्लेन दिस, बट इसके लिए हमको सारे ये बनाने पड़ेंगे, आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? अमंग द आइसोमर्स ऑफ C4H9Br, राइट? अच्छा सॉरी इरम, लिखिए, आप लिखिए. माय बैड. आपको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? लिखिए आराम से लिखिए इसको, उसके बाद वी कैन डिस्कस इट.
Is everyone done? Yes or no? Please tell me. Done. Done. Sir, just a second, Yes. can just scroll up. Sorry. Yes, sir, here only. So you wanted me to scroll up? Okay. No, sir, here only. Write this down. Here only. Let me know once you're done. Yes. Please see this question. इस तरह का सवाल था इरम in your viva. No. Something like this. See, तो No, simply यहाँ पे देख लीजिए. Sorry, yes इरम. नहीं, जस्ट हमें गेस करना था कि वो ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. अच्छा उतना ही करना था. Okay. ये तो इसमें बता दीजिए बी किसके लिए? वीक के या स्ट्रॉन्ग के लिए? बी वीक. वीक एंड ए किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए. स्ट्रॉन्ग. ठीक है. Now you can get this type of question in which you have been given the electrolytes also. Okay. So आपका A क्या होना चाहिए? Strong होना चाहिए. ठीक है. So look for A which is strong. NH4OH it is weak. NH4OH it is also weak. CH3COH भी क्या है? Organic. D. All of these are organic. All of these are weak. सिर्फ KCl यहाँ पे क्या है आपके पास? Strong electrolyte. So the D option is going to be correct. बाकी आपको फिर B वाला देखना ही नहीं. ठीक है. If A is correct. Okay, so इस तरह के भी सवाल आपको आ सकते हैं. I think this has been asked previously in the board examination. इसको लिख लीजिए please. Okay, and Kiram आपका था C4H9Br. You have to make a isomer which is क्या था? Which is chiral, ना? Yes or no? Optically active. सही है? Optically active के लिए what do you need? You need all of the four groups on a carbon atom should be different. तो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते थे. एक Br लगा दिया आपने. ठीक है. एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन लगा देते. बचे दो आपके पास. एक में लगा दिया आपने CH3 और बचा कितने कार्बन आपके पास? दो कार्बन. इधर आपने लगा दिया CH2 CH3. एक तो ये तरीका है. ठीक है. The other way is that you make all the isomers. You make 4 carbon atoms. ठीक है. You put the Br in the first carbon atom. Is this chiral? No. Why? Because this has two same groups. This carbon atoms, hydrogen and hydrogen, these are same. Here also you have hydrogen and hydrogen, it is same. Here also you have hydrogen and hydrogen. So if when you have all the 4 group of atoms different, all the groups attached on a carbon atom is different, then only it is going to be optically active. So ये भी option नहीं होगा. अब Br को बस आप एक तरफ और खिसका देते. Now this is what optically active. Why? Because this is इस कार्बन को अगर आप देखिए, this carbon, hydrogen है आपके पास. This is a different group. Here we have CH3. It is a different group. Here we have Br. It is a different group. Here we have ethyl, which is a different